नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. दिस इज अंकित जोशी. I welcome you all on my new channel Engineering Maths Guru. So students, on this particular channel we will be dealing engineering maths of all semesters of all universities in this country. तो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैथ्स गुरु मेरा यानी कि अंकित जोशी का बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल है और यहाँ पर हम डील करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथ्स, जो कि आप किसी भी कॉलेज के, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो, किसी भी ऑटोनोमस कॉलेज के स्टूडेंट हों, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपके सिलेबस में इंजीनियरिंग मैथ्स है तो उसका परफेक्ट सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिलने वाला है. तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल हियर ऑन दिस चैनल. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. स्टूडेंट्स, लगभग 22 वर्षों तक इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ाने के बाद फर्स्ट टाइम सेमेस्टर मैथ्स में ऑनलाइन लेकर आ रहा हूँ. इंजीनियरिंग सेमेस्टर्स की क्लासेस बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं और एक ब्रेक सा लग गया था क्योंकि ऑनलाइन चल रहा था, तो ज़रूरत महसूस हुई कि इंजीनियरिंग मैथ्स को यानी कि सेमेस्टर वाले मैथ्स को ऑनलाइन में लाया जाए. तो स्टूडेंट्स, मैं अंकित जोशी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम फॉर सेमेस्टर मैथ्स इज़ अगेन बैक ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. तो what will be the communication language? Communication will be in Hindi and English both. So either you are from the extreme south of our country or you are into the extreme north, east, west, north, south, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आपको डेफिनेटली ये चैनल हेल्प करने वाला है. तो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैं आपको बता दूं कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो यानी कि बाटू के स्टूडेंट हो, मध्य प्रदेश में राजीव गांधी प्रौद्योगिक विद्यालय यानी कि आरजीपीवी के स्टूडेंट हो, आप महाराष्ट्र की अलग अलग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा हो, चाहे नागपुर यूनिवर्सिटी के हो, अमरावती यूनिवर्सिटी के हो, मुंबई यूनिवर्सिटी के हो, पुणे यूनिवर्सिटी के हो, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के हो. आइदर यू कैन बी फ्रॉम Telangana, Andhra Pradesh, JNTU student, or you can be from Geetam University, or you can be from any university, any technical university in Tamil Nadu, Kerala, or you may be from West Bengal Technical University, उत्तर प्रदेश टेक्निकल बोर्ड के स्टूडेंट हो, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, यू विल बी डेफिनेटली फीलिंग हेल्पफुल ऑन दिस चैनल. और इंजीनियरिंग मैथ्स का परफेक्ट एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. So this is Ankit Joshi. I have taught my subject more than 1000 times in my career and I am here live for you. और आज हमारा पहला क्लास है पार्शियल डिफरेंशिएशन. और आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कब अप्लाई करते हैं, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स वी आर डिस्कसिंग. वी विल बी डिस्कसिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन हियर. टॉपिक का नाम इंट्रोडक्शन है. यहाँ पर हम कुछ अच्छे सवाल डिस्कस करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग सम वेरी गुड वैरायटी क्वेश्चंस हियर. So I hope I am audible to all of you. Those who are online, they can show their presence in the comment box. I am expecting all of your responses in the comment box. Anyways, I want to upload more and more such videos on this channel, but I need your love and support to grow the content on this channel. So student, you are all welcome to this session. Let's start your journey of engineering mathematics with Engineering Maths Guru. This is our new channel. Yes. So students, this is my brief profile. My name is Ankit Joshi and I have been teaching in the GATE and ESC domain as well as semester maths for a long period. I have been teaching in this domain since 2002. So my experience is around 22 years. And all my dear students, I teach subjects like engineering maths, signals and system and analog circuits. Apart from this, I have taught many other subjects too. But since this channel is named as Engineering Maths Guru, we will be dealing the most important engineering maths here. Of course, M1, M2, M3 for all semesters, all universities, all autonomous colleges. So students, just mark 22 plus years of experience. And I have taught more than 50,000 students online and offline. So what I can do for you, let's see in some upcoming hours.
So partial differentiation, students, when we talk about partial differentiation, what are the various topics, what are the various contents that you need to cover in this chapter? So students, in the very first part we will be covering the basics of partial differentiation, that is introduction. So basics of partial differentiation, and in the upcoming lectures you will see the topics like Euler's theorem, and yes, of course, this Euler's theorem is applicable for homogeneous function. Euler's theorem जो है ये सिर्फ और सिर्फ homogeneous functions के लिए applicable होता है. Then comes a topic named as total derivatives. Total derivative फिर एक important topic है. After this we can see the applications of partial derivatives, Jacobians, Taylor series and Maclaurin series, and maxima and minima. So here maxima and minima कौन सा होने वाला है? Maxima and minima will be the maxima and minima for function of more than one independent variable. So all my dear students, the first three parts can be seen as partial differentiation, and the latter three parts can be seen as the applications of partial differentiation. This is partial differentiation and this one is applications. Okay sir, so let's start our journey. So let us discuss about the partial differentiation. Before that I will make you comfortable regarding this. देखो बच्चों, हमारे पास एक फंक्शन है y. y is a function of single independent variable x. y अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, y अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y is a function of x. यहां पर लिखा है y is the function of x. इसको रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका है y arrow x, y is the function of x. तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने लिखा है यहां पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल. और यहां पर ये जो x लिखा है यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है, व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द फंक्शन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दैट केस सिंपल डेरिवेटिव विल कम इनटू पिक्चर. ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यानी कि सिंपल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे. जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा तो फिर सिंपल डेरिवेटिव यानी कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे. तो बच्चों यहां पर हम देख पा रहे हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड हेंस सिंपल डेरिवेटिव या फिर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. तो हम लिखते हैं सिंपल डेरिवेटिव बिना शर्म के स्ट्रेट खड़ा रहता है, स्ट्रेट dy by dx. सो dy by dx विल एग्जिस्ट. सो वंस अगेन आई वांट टू रिकॉल, अगर एक वेरिएबल का फंक्शन है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो सिंपल डेरिवेटिव यानी कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं. तो y क्योंकि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, x सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन है, तो y के डेरिवेटिव्स कैसे होंगे? सिंपल डेरिवेटिव होंगे. सो dy by dx विल एग्जिस्ट. ओके, अब मैं यहां से हमारी कहानी आगे बढ़ाता हूं. सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास है वेरिएबल z एंड z इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y. इसको लिखने का और एक तरीका है हमारे पास. z को हम ऐसे लिख सकते हैं, z arrow x comma y. सो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दिस z is our dependent variable, and on the right side you can see two variables x and y. This x and y are the independent variables. ये दोनों independent variables हैं. These are the independent variables. अब यहां पर ध्यान दीजिए. नाउ लेट अस concentrate here.
When our dependent variable is the function of more than one independent variable, जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे. देन पार्शियल डेरिवेटिव्स विल एग्जिस्ट. इट मींस आई कैन से दैट z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कैसा होगा? पार्शियल होगा. z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कैसा होगा? पार्शियल होगा. मतलब सर पार्शियल डेरिवेटिव सिंबल थोड़ा सा शर्माता हुआ आता है. जैसे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं है, बेशरम स्ट्रेट खड़ा रहता है, वैसे पार्शियल डेरिवेटिव स्ट्रेट नहीं खड़ा रहता, वो थोड़ा सा शर्माता है. तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे तो यहां पर आएगा डेल z बाय डेल एक्स एंड del z by del y will exist as partial derivative. Will exist as partial derivative. Short में मैंने लिख दिया यहाँ पर PD. So once again I want to make you recall, whenever we have a function of more than one independent variable, in that case partial derivatives will exist. जब हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं. और पार्शियल डेरिवेटिव्स कितने एग्जिस्ट करते हैं? हाउ मेनी पार्शियल डेरिवेटिव्स विल एग्जिस्ट? द नंबर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हियर? सर देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x and y. So we can say that two independent variables x and y will exist. Okay, I request all the students who are new to this session, I request all of you to subscribe this channel because and keep your notifications on so that you will get the updates regarding the upcoming classes. Chaliye, so just have a look over this. Whenever we have a function of single independent variable, in that case simple derivative, yes, simple derivative or ordinary derivative will exist. But when we have function of more than one independent variable, in that case partial derivative will exist. Now the question comes to our mind, how many partial derivatives will exist? कितने partial derivative exist करेंगे? So number of partial derivatives will be exactly equal to the number of independent variables. So in this scenario there are two independent variables x and y, so two partial derivatives del z by del x and del z by del y will exist. Okay, of course these are the first order partial derivatives. I will let you explain. आगे बढ़ते हैं. For example, see here, यहां देखिए बच्चों, if z equal to x square plus y square, find del z by del x and del z by del y. हमारे पास एक फंक्शन है z x square plus y square and we want to calculate the partial derivative del z by del x and del z by del y. So students, please concentrate here that what is given here? Given is z as the function of x and y. You can clearly see here that z is the function of x and y. आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं कि z किसका फंक्शन है? x और y का. z is the function of x and y. So since we have more than one independent variables, therefore partial derivatives will exist. Ab how many partial derivatives will exist? Of course two, because we have two independent variables. So del z by del x comma del z by del y will exist as the partial derivatives. Now there are few questions again in my mind. How to evaluate this partial derivative? ये partial derivative को evaluate कैसे करें? Now listen carefully. The process to evaluate partial derivative is exactly same as that of the simple derivative. Partial derivative evaluate करने का process वही है जो simple या ordinary derivative calculate करने के लिए आपने 12th standard में सीखा था.
the process to evaluate partial derivative is exactly same as that of what you have studied in your 12th standard for ordinary और simple derivative. तो ऑर्डिनरी और सिंपल डेरिवेटिव इवैल्यूएट करने का जो प्रोसेस है ना बेटा, वही प्रोसेस पार्शियल डेरिवेटिव के लिए एप्लीकेबल होगा, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, विद ए स्मॉल चेंज, विद ए स्मॉल डिफरेंस. व्हाट इज दैट स्मॉल डिफरेंस? स्टूडेंट्स बी केयरफुल, ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली. When you are evaluating partial derivative with respect to one independent variable x, the other independent variables should remain constant in the process. जब आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो बचे हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कांस्टेंट माना जाएगा. ठीक है. सिमिलरली जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x विल रिमेन कांस्टेंट. ऑलराइट, are you following my point? So whenever you evaluate partial derivative with respect to x, y will remain constant, and when we evaluate partial derivative with respect to y, x will remain constant. This is the logic. So all my dear students, we have z equal to x square plus y square. I wish to find out del z by del x. मुझे find करना है del z by del x. What should I do? What should I do? I will write a point here. Differentiate. Shall I do it on the next frame? So del z, okay. I want to evaluate del z by del x. What should I do? Differentiate partially with respect to x, and whenever you differentiate partially with respect to x, you need to assume y as constant. Now please see here, del by del x किसका? z का. Partial derivative of z with respect to x. So del by del x of x square plus y square. So derivative of x square with respect to x plus derivative of y square with respect to x. Now listen carefully, students. Derivative of x square with respect to x will be 2x, but in this process बच्चा लोग, this y is constant as it is mentioned here. यहां पर क्लियरली मेंशन किया है कि y कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. So we are getting del z by del x as x, twice x. So del z by del x is obtained as twice x. Del z by del x is obtained as twice x. Now अब हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y. लेट अस कैलकुलेट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y. अगेन आई विल राइट z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, अज्यूमिंग x एज कांस्टेंट. जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्या होगा? x हो जाएगा कांस्टेंट. देखते जाइए. तो del z बाय del x, एक्सट्रीमली सॉरी, आई मस्ट राइट del z बाय del y, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y. सो del z बाय del y. So del by del y of the right hand side, which is x square plus y square. Now let us separate this. Del z by del y equal to del by del y of x square plus del by del y of y square. मैं यहाँ पर ऐसा मान रहा हूँ कि आप सब लोग न्यू स्टूडेंट हैं, आपको कुछ भी बेसिक्स नहीं पता है, इसलिए मैं बहुत बेसिक से बहुत शून्य से आपको पढ़ा रहा हूँ.
तो y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, एंड डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज ट्वाइस y. So del z by del y is obtained as twice y. Del z by del y is obtained as twice y. All right. So students, we have obtained partial derivative of z with respect to x, that is 2x. Partial derivative of z with respect to y, that is 2y. Okay, sir. Then what? Now another example. If u is given as sin xy, find del u by del x and del u by del y. If u is given as sin xy, we have to find del u by del x and del u by del y. चलिए देखते हैं. u दिया है sin xy. We will differentiate partially with respect to x, and when we differentiate partially with respect to x, y will remain constant. So all my dear student, del u by del x on the left hand side, on the right hand side you will get del by del x of sin xy. Derivative of sin xy, derivative of sin xy will be cos xy, and by chain rule of differentiation we will be differentiating xy again with respect to x. Del by del x of xy. All right, now see here, del u by del x cos xy. देखिए यहां पर वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो y विल बी कांस्टेंट. तो डेरिवेटिव के सिंबल से y बाहर आ जाएगा, y विल बी टेकन आउट ऑफ दिस डेरिवेटिव सिंबल, एंड del by del x of x will be 1, del by del x of x will be 1. So we will get del u by del x as y times cos xy. So this is my first partial derivative. All right, are you following? Can I have your response? चलिए फटाफट बताइए, आर यू ऑल फॉलोइंग? So let's proceed. Now we will be calculating derivative of u with respect to y. अब हम फाइंड करेंगे del u by del y. Del u upon del y देखते हैं. So u क्या है? u है sin xy. बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएट पार्शियली with respect to y assuming x as constant. जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मान लेंगे. ओके सर. सो डेल u बाय डेल y इक्वल टू डेल बाय डेल y. हाँ जी, यहां पर आ गया है साइन एक्स वाई, derivative of sin xy will be cos xy. Now according to chain rule xy का डेरिवेटिव फिर से
हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स वाई को अज्यूम कर लिया एक्स, तो साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स वाई। अब जिसको अज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव फिर से एज पर द चेन रूल। सो डेल यू बाय डेल वाई cos xy as it is. With respect to y, x is constant and derivative of y with respect to y is 1. So we are getting del u by del y as x cos xy. Now I want to repeat the entire process for partial differentiation. See, for the function of single independent variable, simple or ordinary derivative will exist. अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है तो सिंपल डेरिवेटिव या फिर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ओके, नाउ फॉर द फंक्शन ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा, इन दैट केस पार्शियल डेरिवेटिव्स विल एग्जिस्ट। कितने पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे? हाउ मेनी पार्शियल डेरिवेटिव्स विल एग्जिस्ट? द नंबर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स existing for a given relation, given function will be exactly equal to the number of independent variables. किसी भी फंक्शनल रिलेशन के लिए कितने पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे बच्चों? जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वहां पर, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उतने पार्शियल डेरिवेटिव्स। द प्रोसीजर टू इवैल्यूएट पार्शियल डेरिवेटिव इवैल्यूएट करने का प्रोसेस क्या है? द प्रोसीजर टू इवैल्यूएट पार्शियल डेरिवेटिव इज एक्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द सिंपल डेरिवेटिव, बट द ओनली डिफरेंस इज when you are evaluating partial derivative with respect to one independent variable, other independent variables should remain constant. जैसे कि जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होंगे, when you are evaluating partial derivative with respect to x, then other independent variable y should be maintained constant and vice versa. If you are evaluating partial derivative with respect to y, then other independent variable x will remain constant. And in this entire process, dependent variable should never be assumed constant. Dependent variable should never be assumed constant. Dependent variable कभी भी constant assume नहीं किया जाएगा। Alright? तो partial derivative evaluate करने का process क्या है? Partial derivative evaluate करने का process वही है जो simple derivative evaluate करने का होता था। फिर अंतर क्या है? What is the difference? Difference ये है कि जब आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y विल रिमेन कांस्टेंट, और जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कभी भी हम कांस्टेंट अज्यूम नहीं करेंगे। वी विल नेवर अज्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल एज कांस्टेंट्स। ओके सर, ठीक है। So this is the frame which is not of use at this point of time. Let's skip this. मैं आपको बता दूं, let me tell you that if z is the function of x and y, अगर z x और y का फंक्शन है तो फिर यहां पर जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो कौन से होंगे? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो होंगे वो होंगे z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। सो दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये x के रिस्पेक्ट में है, डेल z बाय डेल x एंड डेल z बाय डेल y। आगे चलते हैं, व्हाट विल बी हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स? हायर ऑर्डर में तो मैं सेकेंड ऑर्डर लिखना चाहता हूं। तो यहां देखिए, देखो 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 देखो, जैसे कि ऑलरेडी हमारे पास में है डेल z बाय डेल x, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा बच्चों
सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको हम पढ़ेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या पढ़ेंगे? डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। फिर देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास है डेल जेड बाय डेल वाई और इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या मिलेगा? इन दैट केस वी विल गेट, हाँ, डेल जेड बाय डेल वाई पहले से था, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर वाई। ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। आगे देखिए, if you have del z by del x, let us say del z by del y, अगर आपके पास है del z by del y and you are differentiating this with respect to x, then this will be equal to del square z upon del x del y। जस्ट ध्यान से देखिए, अगर आपके पास है पार्शियल डेरिवेटिव del z by del y and if you are differentiating this with respect to x, so what you will get? You will get del square z upon del x del y. And just think of the opposite. If you are having del z by del x and if you are differentiating with respect to y, so what you will get? You will get del square z upon del y del x. And you must understand that del square z upon del y del x is always equal to del square z upon del x del y. Both are equal. Yes. So, suppose you are interested in third order derivatives. Third order partial derivatives. I will write few of them. Suppose we already have second order partial derivative with respect to x and you differentiate it with respect to x. What you will get? You will get third order partial derivative with respect to x. Suppose you have del square z by del y square and if you differentiate it with respect to y, so it will turn out as del cube z upon del y cube. I hope you are all following this. No. Let us assume that you are having del square z upon del x del y and if you are differentiating it with respect to x, yes, tell me what you will get? We will get del square into del, that is del cube in the numerator, and del x into del x will be del x square into del y. So this is not second order, this is third order derivative. इसमें दो बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में. If you are having del square z by del x del y and you differentiate this with respect to y, so what you are getting? We will get del cube z upon del x into del y square. All right? Yes, sir. Suppose you are having del square z upon del y square and you differentiate this with respect to x. What you will get? Again you will get del cube z upon del x into del y square. Similarly, if you are having
del square z upon del x square, and you differentiate this with respect to y, क्या मिलेगा? We will get del cube z upon del x square into del y. So students, with this approach we can evaluate higher order partial derivatives. I just want to listen something from you. This can have another notations also. We'll see it later on. Let's enter into some questions. अच्छे सवालों की तरफ जाते हैं. So we will be dealing some very important questions. Just now we have told you that del square f upon del x del y will be del square f upon del y del x. And student, one thing I want to add here, that you will feel my experience if you follow my classes, prepare my classroom notes, follow my classroom notes, then you will realize whatever sir has taught in the live sessions, you are getting exactly same or similar questions in your actual semester exams. So this is where you can find my experience, but I should not tell more on this. Just in due course of time you will realize whatever I taught here in these sessions will convert into questions in your semesters. This is my promise. So student, this is our very first question. I request all of you, either you are watching it live or as I am teaching it right now at this time around 12:30 night, there may be chance that you may be watching it tomorrow, day after tomorrow, or maybe during your exam. But if you are watching this session, then I would just like to say that just have your notebook and pen with you. Make proper notes along with me. Okay? Yeah. So prove that del square u by del x square del square u by del x square plus del square u by del y square plus del square u by del z square equal to 0 when u is this one. U is x square plus y square plus z square raised to the power minus 1 by 2. U is x square plus y square plus z square raised to the power minus 1 by 2. So I am starting my process here. I do not bother how many are watching. I am teaching with my heart and soul. You must follow this. Now what is given here? क्या दिया है बच्चों? Given है u equal to x square plus y square plus z square raised to the power minus 1 by 2. This is my equation number 1. Now what we will do? We will differentiate this partially with respect to x, then with respect to y, and then with respect to z. Differentiate equation 1 partially with respect to x. And mind my words, when you differentiate it partially with respect to x, the other independent variables are y and z. Here u is the dependent variable. Hello, u kya hai? What is this u? U is the dependent variable which is the function of x, y and z. So x, y and z are the independent variables. So when you evaluate partial derivative with respect to x, procedure says that other independent variables should remain constant. जब आप x के रिस्पेक्ट में partial derivative लेंगे तो दूसरे independent variables जो हैं वो constant होंगे. So y and z will remain constant. So I should mention here y and z should be treated as constant. बहुत बढ़िया, well done. So del by del x of whom? किसका? Del by del x of u, यानी कि del u by del x. So del by del x of right hand side, x square plus y square plus z square to the power minus 1 by 2. Now listen carefully, ध्यान से देखिए. We want to differentiate this function with respect to x.
बट y एंड z इज कांस्टेंट, y और z कांस्टेंट है। अब हमने क्या किया, वी अज्यूम्ड दिस ब्रैकेट एज x, वी अज्यूम्ड दिस ब्रैकेट एज x, हमने इस ब्रैकेट को x मान लिया। सो x टू द पावर n का डेरिवेटिव, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n? n x to the power n minus 1. So I am assuming this bracket is x. So derivative of x to the power n is n x to the power n minus 1, n minus 1, and this bracket is having x square plus y square plus z square. Now again differentiate the function which you have assumed as x. So we have assumed this bracket is x, हमने जिसको x assume किया था उसका डेरिवेटिव फिर से। So now I will be differentiating this with respect to x. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x। अरे यार समझ में नहीं आया, once again फिर से देखते हैं, फिर से देखेंगे दोस्तों। देखो हम इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इस ब्रैकेट को हम मान लेते हैं x, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो ये माइनस 1/2 ब्रैकेट की पावर n माइनस 1, और x किसको माना था वो एज इट इज लिख दिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जिसको x अज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव फिर से, दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ चेन रूल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर यू ऑल फॉलोइंग? भाई जिंदा है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रेजेंस दिखाइए। सो डेल यू बाय डेल एक्स, minus 1/2, see this bracket, x square plus y square plus z square, minus 1/2 minus 1 मिलकर हो गया minus 3/2। now derivative with respect to x, derivative of x square is 2x, x square का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं भाई, कितना आएगा सर, 2x आएगा। डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर 0, डेरिवेटिव ऑफ z स्क्वायर 0, y और z कांस्टेंट है, y and z are constant in this process because we are evaluating derivative with respect to x. So derivative of x square is 2x, but y square plus z squares are constant, so their derivative will be 0. So del u by del x, del u by del x is this 2 and this 2 gets cancelled. Now how many of you understood this? Please tell me fast, have you understood this? Del u by del x is minus x square plus y square plus z square raised to the power minus 3/2. Now we want डबल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो क्या करना होगा, नो डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन, फिर से डिफरेंशिएट अगेन पार्शियली with respect to x, and y and z will be constant, y and z will be constant, see here. So del by del x of del u by del x equal to minus, as it is, del by del x of x into x square plus y square plus z square to the power minus 3/2. Now we will be applying product rule of differentiation on the right hand side. On the left hand side we are getting del square u by del x square.
On the right hand side we will be applying product rule of differentiation. So please see here, first function derivative of second. Now what is product rule of differentiation? First function x as it is, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन है, ये है u और ये ब्रैकेट है v, सो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v. अब क्या करें, फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u x. सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, second function derivative of first. Very good. See here. इस ब्रैकेट को मान लिया x, तो x की पावर -3/2 का डेरिवेटिव n x की पावर n-1, तो n यानी कि -3/2 x टू द पावर n-1, so -3/2 -1. Now again differentiate this bracket with respect to x. So derivative of x square is 2x, y स्क्वायर और z स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव 0. यहां पर आ जाइए, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव आ गया 1. अब मुझे बताइए आगे क्या हो सकता है. नाउ यू कैन सी हियर माइनस एंड माइनस प्लस, बिफोर दैट यू कैन सी हियर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होने वाला है +3x इंटू एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इस ब्रैकेट की पावर आएगी -5/2. Now this minus sign getting multiplied in the second term, so minus x square plus y square plus z square raised to the power -3/2. All right, हाँ जी. Now similarly I can write the other two partial derivatives. हमने पूरी मेहनत से भी by applying all our efforts we found out del square u by del x square, but now no need to calculate this with entire method, nothing, just you need to write similarly, because u जो है इसमें x y z सबकी पावर 2 है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे अब हम देखो, सिमिलरली del square u by del y square एंड del square u by del z square. चलिए बताइए, यहां पर जैसे 3x स्क्वायर आया, यहां पर आएगा 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 एंड दिस ब्रैकेट एज इट इज. देखो जहां पर x था वहां पर y आ गया, बाकी सब तो सेम है. और डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर आएगा 3z स्क्वायर, यहां पर x था, x की जगह पर आ गया z, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
minus 5 by 2 raised to the power minus 5 by 2 minus x square plus y square plus z square raised to the power minus 3 by 2. So all my dear students, yes, so I will mark this equation as equation 1, this one is equation 2 and this one is equation 3. अब हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, दैट इज व्हाट वी नीडेड हियर. चलिए इनको ऐड कर लेते हैं. डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर. हाँ जी, क्या बन गया ये बताइए. ये तीनों टर्म्स को मैं ऐड करता हूं. देखो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐड हो गया, ये तीनों को ऐड करेंगे. व्हेन वी ऐड ऑल थ्री, 3 and this bracket, 3 and this bracket and 3 and this bracket will be common. So 3 times, what is that bracket? X square plus y square plus z square to the power minus 5 by 2. Now what is remaining in this bracket? क्या बचा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहेगा x square, यहाँ पर y square और यहाँ पर z square. What about the other three terms? इन तीनों को ऐड करेंगे तो सेम टर्म से -3 टाइम्स दिस टर्म. Now all of you please concentrate here. Del square u by del x square, del square u by del y square plus del square u by del z square. Now please concentrate 3 times. This bracket is having power 1 and this bracket is having power minus 5 by 2. So what happens? Base is same, powers will be added. So x square plus y square plus z square, power 1 and power minus 5 by 2. 1 minus 5 by 2 ये होने वाला है minus 3 by 2. And the another term is minus 3 times x square plus y square plus z square to the power minus 3 by 2. So we can say that the first term will cancel the second term. Say yes or no. फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को कैंसिल कर देगी दोस्तों. ये टर्म ने कैंसिल कर दिया. सो व्हाट वी आर गेटिंग, वी विल गेट डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर del square u by del z square. This will be 0. So I think we have done with this question. Yes, यही हमको प्रूव करना था. हिंदुस्तान पेट्रोलियम hence proved. hence. So partial differentiation questions are little bit lengthy and that's why students give up very early. So if students will get quite better concept, they got the link, then definitely they can do it. So I request all of you not to give up. क्वेश्चन को शुरू किया है तो अंत तक कंप्लीट कीजिए. Do it till end. चलिए, it's very simple only, but it takes time.
So this is what we supposed to prove. And students, I will provide the PDF of this classroom session, yes, on my Telegram group. And at the end of this session, I will share the Telegram group link in the comment box. Okay. Here comes our next question. If u equal to log x cube plus y cube plus z cube minus 3x by z, then show that del by del x plus del by del y plus del by del z whole square u. ये जो ब्रैकेट है, this is just an operator. Very very important question. This is equal to minus 9 times minus 9 upon x plus y plus z whole square. So let us do it. Important one. See it. What is given here? Given है u equal to log to the base e x cube plus y cube plus z cube minus 3x y z. चलिए देखते हैं. सो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं. मुझे चाहिए, देखो सबसे पहले जस्ट फॉरगेट अबाउट व्हाट यू हैव टू प्रूव. भूल जाइए आपको क्या प्रूव करना है. सबसे पहले आप क्या कीजिए इस सवाल में, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट del u by del x, del u by del y and del u by del z. Do it. So first of all we will calculate del u by del x. So differentiate partially with respect to x. Now when I differentiate this partially with respect to x, y and z will be constant. Y और z constant हो जाएंगे. ठीक है. So del u by del x on the right hand side, del by del x of this logarithmic term, बड़ी सी टर्म है गॉडजिला जैसी, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So del by del x of this function क्या होगा? This will be del u by del x is on the left hand side. Now see here, इस पूरे ब्रैकेट को आप मान लीजिए x. So derivative of log x will be 1 by x. Derivative of log x will be 1 by x. So derivative of this bracket, see log x का डेरिवेटिव तो 1 by x हो गया. अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फिर से, तो इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x, y और z कांस्टेंट है. डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. So del u by del x x cube plus y cube plus z cube माइनस 3xyz. और यहाँ देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर. y एंड z आर कांस्टेंट टर्म्स, सो देयर डेरिवेटिव्स विल बी 0. माइनस 3yz कांस्टेंट है but they are not pure constant. साथ में x भी है, there is x is also there. So derivative of x with respect to x is 1. So I will write one more step here. Del u by del x. You can take 3 common from the numerator. You will get x square minus yz upon
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. This is our equation number 1. Now students, we can similarly write del u by del y and del u by del z. Say yes or no. By property of symmetry, we can write del u by del y and del u by del z. Say yes or no. Similarly, del u by del y and del u by del z. So del u by del y में क्या बदलाव होंगे? डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा यस, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड है, जब हम वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड. And in denominator you have x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. And similarly del u by del z will be, हाँ यहाँ पर क्या आएगा, y की जगह पर अब आ जाएगा z स्क्वायर और एक्स जेड की जगह पर आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. तो सिमेट्री प्रॉपर्टी से हमने ये दो डेरिवेटिव्स भी लिख दिए. अब आप 11th-12th के स्टूडेंट नहीं हैं, आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप बहुत सारी स्टेप्स लिखेंगे, तो हर स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो हमने यहाँ तक सारी स्टेप्स लिखी और उसके बाद सिमेट्री से हमने ये दोनों लिख दिया. नो बडी विल डिडक्ट योर मार्क, एक्चुअली दे विल अप्रिशिएट, यू नो द कॉन्सेप्ट्स. So we have got these partial derivatives. Now we will add equation 1, 2 and 3. अब हम equation 1, 2 और 3 को ऐड करेंगे. तो del u by del x plus del u by del y plus del u by del z. अब मैं अलग अलग तीनों का एडिशन नहीं दिखाऊंगा. देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि इक्वेशन 1, 2, 3 का डिनोमिनेटर सेम है. डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 1, 2 and 3 are same. So this will be our LCM. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. This is the denominator. Now in the numerator again 3 is common everywhere. 3, 3 और ये 3. So 3 is taken common. इंजीनियर्स आर नोन फॉर स्मार्ट वर्क, है ना, हम इंजीनियर हैं, इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो स्मार्ट वर्क करेंगे थोड़ा सा. तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से है एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यहाँ पर है माइनस वाई जेड, फिर माइनस एक्स जेड और माइनस एक्स वाई. इनको भी मैं एक साथ लिख लेता हूँ, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड या जेड एक्स, वॉट एवर यू राइट. और स्टूडेंट्स अब हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को फैक्टराइज करेंगे. सो न्यूमरेटर एज इट इज, चलिए डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बताइए. डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ये होने वाले हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड
और यहाँ पर आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में डिटर्मिनेंट में पढ़ा होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के दो फैक्टर्स होते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, इसके दो फैक्टर्स, एक फैक्टर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा फैक्टर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स होना चाहिए ना। हाँ जी, ओके। अब देखिए ऊपर जो न्यूमरेटर में एक टर्म है और डिनोमिनेटर में भी एक टर्म है, ये कैंसिल हो जाएंगी। So this bracket gets cancelled. So finally we are getting del u by del x plus del u by del y प्लस डेल u by del z। क्या मिला हमको सर? ये हमें मिल गया 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। देख लीजिए इसको अच्छे से। अब हम रियलाइज करेंगे क्या फाइंड करना है हमें। हमें प्रूव करना है ये वाली टर्म, ये पूरा। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड। और हम इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसके बाहर लिखा हुआ है u। मतलब ये ब्रैकेट जो है ये एक ऑपरेटर है जो कि u पर ऑपरेट हो रहा है। ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार है। और यहां पर u ऑपरेट हो रहा है, तो u को मैं इस सेकेंड वाले ब्रैकेट में ऑपरेट कर देता हूं। तो डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, ये हमारा पहला ब्रैकेट। और यहां पर आ जाएगा u अंदर ऑपरेट हो गया तीनों में, तो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। अब देखिए बच्चों, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, और ये जो तीनों टर्म्स है इनका सम कितना आएगा? इनका सम है हमारे पास इक्वेशन 4 में, कितना है? 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब देखो डेल बाय डेल एक्स इस पर ऑपरेट होगा प्लस डेल बाय डेल वाई इस पर ऑपरेट होगा प्लस डेल बाय डेल जेड इस पर ऑपरेट होगा। तो क्या बनेगा देखो, डेल बाय डेल एक्स ऑपरेट हुआ 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल बाय डेल वाई ऑपरेट हुआ फिर से 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर डेल बाय डेल जेड भी तो ऑपरेट हुआ किस पर? 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो 3 तो बाहर, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस ब्रैकेट को मान लिया x, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन ब्रैकेट का स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। और x प्लस वाई प्लस जेड का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव आएगा 1, y और z का 0, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, सेकेंड टर्म पर आ गए हम। 1 अपॉन, इस ब्रैकेट को मान लिया मैंने y, तो 1 अपॉन y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y
-1/y², मतलब ये ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फिर से विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x का डेरिवेटिव 0, y का 1 और z का 0, तो यहाँ पर इंटू 1 आएगा। जब मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम रहेगा। सिमिलरली 3 बाहर, इस ब्रैकेट को मान लिया z, तो डेल बाय डेल जेड ऑफ 1/z होता तो आप लिखते -1/z², तो यहाँ पर इस ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया। और इसका डेरिवेटिव फिर से, तो x का 0, y का 0 और z का 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। सो अल्टीमेटली देखो डिनोमिनेटर क्या आ गया, ऊपर आ गया -3, फिर -3 और फिर -3, यानी कि हमारे पास आ गया है, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली वैल्यू। डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, ये किस पर ऑपरेट हो रहा है सर, ये ऑपरेट हो रहा है u पर। एंड व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड सर, राइट हैंड साइड इज -9 अपॉन x plus y plus z whole square. So this is what we supposed to prove in this question. Hence proved. So all my dear students, I hope आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का मेरा ये पहला क्लास पसंद आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स इसको रिकॉर्डिंग में देखेंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सेशन को शेयर करें और पेन और नोटबुक लेकर बढ़िया से नोट्स बना लें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है इंजीनियरिंग मैथ्स ग्रुप, वो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। तो मैं अभी आपके पास कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूं, जिससे आप लोग इस पीडीएफ को कलेक्ट कर सकें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। स्टिल आई विल प्रोवाइड यू द टेलीग्राम ग्रुप लिंक। ये आ गया लिंक आपके कमेंट बॉक्स में। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। और हम जल्दी ही इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स है, यहीं से हम इस क्वेश्चन से कल की क्लास में कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। कल की क्लास में यहीं से कनेक्ट करेंगे। So thank you so much students.
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इस सेशन में आए और सेशन को वॉच किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सेशन के लिंक को शेयर करें, और इतना ही नहीं, अभी तो शुरुआत है, बहुत अच्छे अच्छे सेशंस और आपकी इंजीनियरिंग मैथ्स की कंप्लीट कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस चैनल पर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।